friends, today my topic is question answers or NCRT question answers of chapter 1, that is some basic concept of chemistry. Now my question number 1 is calculate the molar mass of the following, that is water, CO2 and methane. Now the number 1, water. How can you calculate the molar mass of water? Now I have told you in my previous lecture that we can calculate the molecular mass of each and every compound by adding all the masses of each and every atom. So here atomic mass of hydrogen, that is 2 into atomic mass of hydrogen plus 1 into atomic mass of oxygen. So atomic mass of hydrogen is 1, so 2 into 1 plus oxygen mass 16. So your equation is 2 into 1 plus 1 16. So your answer is 2 plus 16, that is 18 unit or 18 gram. Next is the CO2. Now 1 into atomic mass of carbon, because the carbon has only one atom. Oxygen is 2 atom. So 2 into multiply by atomic mass of oxygen. Now the atomic mass of carbon is 12 and atomic mass of oxygen is 16. So 2 into 16. So 12 plus 32, which is equal to 44. Now next methane. Now atomic mass of carbon plus 4 into atomic mass of hydrogen. Now carbon mass 12 plus hydrogen mass 1 into 4. So 12 plus 4, which is equal to 16. Now our next question is calculate the mass percentage of different elements present in sodium sulfate. सोडियम सल्फेट में आपको हर एक एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है. सो हाउ कैन आई कैलकुलेट? सो इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट. तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट विच इज इक्वल टू mass of that element upon में total mass of the compound multiply by 100. So if we want to calculate the percentage of sodium, firstly we have to calculate the molar mass of sodium sulfate, that is 2 into 32 plus 32 plus 4 into 16. Now sodium mass 23, sulfur mass 32, oxygen mass 16, but the atom of sodium is 2, so 2 into 23, sulfur has only one atom, so plus add 32, and oxygen has 4 atoms, so 4 into 6. So total mass is 142. Now so for the mass percentage of element, firstly you have to calculate the percentage of sodium. So sodium has 46, that you have already calculated as 46% in the 142 gram. So 46 upon में 142 multiply by 100, और वो कितना आएगा आपका बच्चे सॉल्व करके? 32.4%. Now if we want to calculate the mass percentage of sulfur. Mass percentage of sulfur. Now how can you calculate it? Mass of sulfur is 32. Total mass of sodium sulfate 142. So 32 divided by 142 multiply by 100, which comes out to be 22.6%. Now next is mass percentage of oxygen. That is percentage of oxygen is 64. That is 16 into 4. 64 divided by 142 multiply by 100. So it comes out to be 45.05%. So by this we can calculate the each and every atom percentage in a particular molecule. Now next is question number 3, that determine the empirical formula. क्या कैलकुलेट करना है बच्चे आपको? एम्पेरिकल फॉर्मूला of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% oxygen. Now how can I calculate it? By making all the columns that you need for the calculation of empirical formula. So first column is, that will be the symbol. Now symbol is iron, oxygen. Second column
Your percentage, iron 69.9%, oxygen is 30.1%. Now we can calculate the moles. Now how can you calculate the moles? Given weight upon molar mass. Now given weight, that is for the iron 69.9% and the mass 55.85. So 69.9 divided by 55.85, it comes out to be 1.25. Now same here we can calculate the moles of oxygen, that is given weight or the percentage of oxygen divided by atomic mass of oxygen. Now given percent 30.1%, mass 16, so 30 divided by 16, which comes out to be 1.8. So simple whole number ratio is 1.25 is to 1.88, which comes out to be 1:1.5. Now we have to multiply this number, any number that your points has to be deleted. Now you can multiply 1 by 2 and 1.5 by 2. Now the ratio comes out to be 2 is to 3. This is your simple whole number ratio, 2 is to 3. So that's why iron 2, oxygen atom 3, and your empirical formula is Fe2O3. Empirical formula is Fe2O3. Now next question number 4. Calculate the amount of carbon dioxide that could be produced. भाई आपको क्या निकालना है? CO2. क्लियर? आपको क्या प्रोड्यूस करना है? कितनी CO2 प्रोड्यूस हुई है? दैट कब किससे? When 1 mole of carbon is burned in air. Now बच्चों, if we want to solve the stoichiometric like questions, we have to know the each and every equation with symbols and balancing. Firstly, we have to know the reaction and then balancing that reaction. Now 1 mole of carbon burn in air. Now you know that carbon means Cal, yani O2, that a burning process has to be occur in presence of oxygen. So your equation is C plus O2 give rise CO2. Your equation is C plus O2 give rise CO2 and this was the balanced equation. तो अब यहाँ पे हमें ये इक्वेशन बच्चे हमें क्या सिखा रही है कि 1 मोल कार्बन रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, तब कहीं जाके 1 मोल CO2 प्रोड्यूस्ड होती है. क्लियर? नाउ एज पर दिस बैलेंस्ड इक्वेशन 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होके क्या प्रोड्यूस करती है? 1 मोल CO2. और यू ऑल्सो सेज दैट 44 ग्राम ऑफ CO2. ना तो क्वेश्चन नंबर 2, अब वो क्या कह रहा है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इफ यू हैव द 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. If you have 16 gram of oxygen. So as per balanced chemical equation, this equation told us that 32 gram oxygen produced 44 gram CO2. भाई 32 ग्राम ऑक्सीजन तो 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करती है. तो 16 ग्राम ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस? जस्ट हाफ, एग्जैक्टली हाफ, 32 हाफ. तो दैट मीन्स जब 32 44 प्रोड्यूस करती है तो 16 कितना प्रोड्यूस करेगी? 22. तो 16 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगी? 22 ग्राम ऑफ CO2. नाउ थर्ड इक्वेशन, ओनली 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल. क्लियर? अगर आपके पास सिर्फ क्या है 16 ग्राम ऑक्सीजन अवेलेबल है तो यानी अब आपका ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है और 16 ग्राम ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगी? ओनली 22 ग्राम ऑफ CO2. Now your next question is calculate the mass of sodium acetate. Calculate the mass of sodium acetate required. मतलब क्या कहना चाह रहा है वो कि भाई कितना आपको सोडियम एसीटेट चाहिए. क्लियर? कितना सोडियम एसीटेट आप मिक्स करोगे ताकि क्या बन जाए आपका? रिक्वायर्ड टू मेक
500 ml ऑफ, ताकि आपका 500 ml का सोल्यूशन तैयार होए, और दैट विल बी ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन। और उसकी मोलैरिटी कितनी है? मोलर मीन्स मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी है? 0.375 molar aqueous solution, and the molar mass of the sodium acetate is 82.02 gram per mole. Now, in this numericals, now we have volume, that is 500 ml, molarity is 0.375 molar aqueous solution, or you also told says that 0.375 m. सो पहले बच्चों मुझे ये आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि 0.375 कैपिटल M, इसका मतलब क्या है? नाउ 0.375 का मतलब होता है मोल्स। किसके मोल्स है? सोल्यूट के। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 0.375, and capital M या molar means that is dissolved in the 1000 ml solution, that is dissolved in the 1000 ml solution। यहाँ से मैं क्या पता चला बेटा? 1000 ml में 0.375 मोल्स डिजोल्व है। तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट कि भाई 500 ml में कितने डिजोल्व होंगे। सो यू कैन मेक अ इक्वेशन, 1000 ml solution has 0.375 moles, then 500 ml, so by dividing by 1000 and multiply by 500, so your moles are 0.1875 moles. So your moles are 0.1875 moles. Now you have to know what amount of sodium acetate that you use. So अगर अब मुझे क्या पता चल गया बच्चे? मोल्स। अगर मैं इन्हीं मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, मोल वेट को कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा? गिवन वेट। सो हेयर 82 इज द मोलर मास of sodium acetate and 0.875 is the moles. So by calculating the moles with the mass, we can calculate the given weight. Question number 6. Calculate the concentration of nitric acid. बच्चे आपको क्या करना है? नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन निकालनी है। किस में निकालनी है? मोल्स पर लीटर। तो यू डोंट थिंक सो मोल्स पर लीटर इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। सो इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड विच हैज़ अ डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml, जिसकी डेंसिटी कितनी है? 1.41 ग्राम पर ml है। एंड द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इज 69%, और जो मास परसेंटेज है वो कितनी है? 69% है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा बेटे हम क्या हमने निकालना है और हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। हमें निकालनी है मोलैरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड। हमें क्या दे रखा है? डेंसिटी। नाउ डेंसिटी की वैल्यू क्या है? 1.41 ग्राम पर ml, और एक हमें नाइट्रिक एसिड की क्या दी हुई है? परसेंटेज, दैट विल बी द 69%। सो अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था? जैसे आया था 0.375 m, तो व्हाट डज द मीनिंग ऑफ 0.375 m? 0.375 is the moles of solute and m is the molarity, that means 1000 ml. Same here, 69% is the 69 is the amount of solute. 69 means amount of solute, percentage means 100 and solution. तो 69 amount of solute है, 100 आपका क्या है? आपका solution means 100 ग्राम solution में 69 ग्राम आपका क्या है? नाइट्रिक एसिड है। Clear? Now you have the amount of solvent, you have the amount of solute, and also you have the amount of solution. Now if we calculate the molar mass, then hydrogen mass plus nitrogen mass plus 3 into oxygen mass. Hydrogen mass 1, nitrogen mass 14, and oxygen mass is 16. So it comes out to be 63 gram. So the given weight is 69 and the molar mass 63. So you can easily calculate the moles by W by M. W is the given weight
M is the molar mass, that is 69 by 63, and it comes out to be 1.095 moles. तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कितने निकले बच्चे? 1.095 मोल्स. नाउ अब हमें ये पता करना है कि मोलैरिटी निकालने के लिए हमारे पास मोल्स निकल आ चुके हैं, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम नहीं है. तो बाय यूजिंग द डेंसिटी फॉर्मूला वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम. नाउ द डेंसिटी फॉर्मूला इज मास बाय वॉल्यूम, and we have to calculate the volume. So the formula is mass by density. Now the mass आपकी solution का है, that will be the 100 gram, and the density of the solution is 1.41. तो 100 divided by 1.41, that it comes out to be 70.92 ml. Or you can also convert into liter by multiply by 10 to the power minus 3. So the concentration moles per liter. So moles is 1.095 and the volume is 70.95 into 10 to the power minus 3, and it comes out to be 15.44 moles per liter. Then this is the concentration of nitric acid. Now next is the question number 7, and the question number 7 is how much copper can be obtained from 100 gram of copper sulfate. कि भाई 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से आप कितना कॉपर ऑब्टेन कर सकते हो. तो फर्स्टली यू नो दैट द व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट. तो कॉपर प्लस सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन. नाउ कॉपर मास 63.5, sulfur mass 32, oxygen mass 16, multiply by 4, and it comes out to be 159.5. तो बच्चे अगर कॉपर सल्फेट सिर्फ एक इंडिविजुअल कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला मैं लेती हूँ तो इसका मास कितना आता है आपका 159.5 ग्राम. तो क्या इस बात को मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट हैज 63.5 कॉपर, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर. आई कैन टेल, आप कह सकते हो क्योंकि कॉपर सल्फेट के फॉर्मूले में कॉपर कितना है 63.5 ग्राम. सो आप 100 ग्राम में ही तो कैलकुलेट करना है आपने कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना है, जबकि आपको पता है 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में 63.5 ग्राम कॉपर है. तो यू नो दैट, तो यू हैव टू कैलकुलेट द 100 gram copper sulfate will contain. So 63.5 multiplied by 100 divided by 159.5, and it comes out to be 39.81 gram. So 100 gram copper sulfate में कितना कॉपर है 39.81 ग्राम. क्लियर बच्चे? वेरी इजी. आपको कॉपर सल्फेट का मास निकालना है, मोलर मास, और फिर आपको पता करना है कि उस मोलर मास में कॉपर का कितना वेट होता है. देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉपर इन 100 ग्राम कॉपर सल्फेट. Now next is the determine the molecular formula of an oxide of iron in which the mass percentage of iron and oxygen is 69.9% and 30.1%, and the molar mass of this oxide is 159.69%. So this is very much similar question that I have done you previous. So the here firstly you know that the mass percentage of iron is 69.9% and mass percentage of oxygen is 30.1%. Now you can calculate the number of moles of iron. Now how can you calculate the moles of iron? That is given weight divided by molar mass. Now given weight is iron 69.9 and molar mass that will be 55.85, and it comes out to be 1.25. Similarly, you can calculate the moles of oxygen, that is 30.1 divided by 16, and it comes out to be 1.88. So simple whole number ratio you can calculate it, 1.25 ratio 1.88, and it comes out to be 1 is to 1.5, and whole number ratio is 2 is to 3, multiply 2 by whole formula. 1 into 2 to 1.5 into 2, that is comes out to be 3. So the empirical formula is F
Fe2O3. So in next step we have to calculate the molecular formula. So for this we have to know the empirical formula mass. Now we can calculate the empirical formula mass by 2 into mass of iron plus 3 into mass of oxygen. Now it comes out to be 159.69. It comes out to be 159.7. Now after dividing this molar mass divided by empirical formula mass, it comes out to be 1. Now the value of n is 1. So the how can you calculate molecular formula? So the molecular formula is n into n into empirical formula. Now the empirical formula is Fe2O3 and the number of n is 1. So 1 into Fe2O3 and the molecular formula comes out of the oxides is Fe2O3. Now here next question is question number 9. Calculate the atomic mass of chlorine. Calculate the atomic mass of chlorine using the following data. Now the natural abundance, that is carbon 31st isotope is chlorine 35 and second is chlorine 37. Now percentage, that is comes out to be 34. This is the molar mass 34.9 and the carbon 37, that is 36.9 and percentage 75.77 and the chlorine 37, that is 24.23. Now we have to calculate the average atomic mass. So how can you calculate the fraction abundance multiplied by molar mass plus fraction abundance multiplied by molar mass? Now fraction abundance कितना है 75.77 multiplied by 34.96 plus 24.23 multiplied by 36 by 96 divided by 100. After solving this equation, you will get 35.45 or 35.5. This is the average atomic mass of chlorine. Now, I hope you clear this question कि abundance सिंपल आपने क्या करना है बच्चे, abundance को मोलर मास से मल्टीप्लाई करो. आपको जितने आइसोटॉप्स दिए गए हैं उन सभी आइसोटॉप्स की अबंडेंस को आपने मोलर मास से मल्टीप्लाई करके फिर एक दूसरे के साथ आपने क्या करना है, ऐड करना है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, अब आपके पास 3 मोल है इथेन की. नाउ द फॉर्मूला ऑफ इथेन इज C2H6. इथेन का फॉर्मूला क्या है बेटा, C2H6. तो अब हमने इस मिथेन के फॉर्मूले से, और यू हैव द 3 मोल्स, you have the 3 moles of ethane. Keep in mind that you have the 3 moles of ethane. Now number 1, number of moles of carbon atom. आपके पास कितने, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, that how to calculate the number of moles of carbon atom. Second, you have to calculate the number of moles of hydrogen atom, and third, number of molecules of ethane. Now as I know the formula of ethane, so I know that the formula of ethane is C2H6. So we can say that 1 mole ethane has 2 atom of or 2 moles of carbon atom. Clear? 1 mole ethane में 2 moles carbon atom होते हैं. तो 3 moles में कितने होते हैं, 1 में 2 होते हैं तो 3 में कितने होंगे, नेचुरली बात है 6. तो 3 moles में कितने moles हैं कार्बन एटम के, 6. नाउ अब हमें पता चला 1 मोल इथेन में आपके कितने हाइड्रोजन है, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है. तो 3 मोल में कितने होंगे, 3 into 6 दैट इज कम्स आउट टू बी 18. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 18. नाउ 1 molecule of ethane, as you know that 1 molecule of ethane is equal to 6.022 10 to the power 23 particles. ये बात फिक्स है, दैट इज द अवोगाड्रो नंबर. जब 1 मोल में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स हैं, तो हाउ मच मोल्स आर प्रेजेंट इन 3 मोल्स. तो 3 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एंड इट कम्स आउट टू बी 18.069 इंटू 10 to the power 23 and this will be
the moles which is present in the 3 moles of ethane. Clear? Number of particles which is present in the 3 moles of ethane. Now, this is your next question. That is question number 11. So, what is the concentration of the sugar? Now, the sugar formula is C12H22O11. So, what is the concentration of the sugar in moles per liter? If it's 20 grams are dissolved, तो आपको 20 ग्राम शुगर दी गई है और उसको इतने पानी में डिजोल्व किया गया, डिजोल्व विद एनफ वाटर, सो दैट योर फाइनल वॉल्यूम इज 2 लीटर। भाई इतने पानी में डाला गया है कि आपकी वॉल्यूम कितनी हो गई है, 2 लीटर की। और यू हैव टू नो द कंसंट्रेशन। दैट मीन्स वो क्या कह रहा है आपसे, न्यूमेरिकल क्या पूछ रहा है आपसे, दैट विल बी टू हाउ टू कैलकुलेट द मोलैरिटी। नाउ यू नो दैट यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्टली योर नंबर ऑफ मोल्स। नाउ नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। नाउ द गिवन वेट इज 22 grams and the molar mass you can easily calculate it, that is C12H22O11, and it comes out to be 342. So 20 divided by 342 divided by 2. Clear? That is comes out to be 0.02925 moles per liter, or you can say 0.02. Clear? Moles per liter. Now next question is 12th question. If the density of methanol is 0.793 kg per liter, तो what is its volume needed? अब मुझे इसकी कितनी वॉल्यूम चाहिए कि क्या बन जाए, 2.5 लीटर सोल्यूशन तैयार हो जाए, 0.25 m सोल्यूशन की वॉल्यूम कितनी हो जाए। नाउ you have volume 2.5 liters, molarity 0.25 moles, and the density is 0.793 kg per liter, and you have to calculate the volume needed for making 2.5 liters. Now for solving this, firstly we have to calculate the molar mass, because in case of molarity you have to know the molar mass of methanol. Now methanol का formula क्या है, CH3OH. So carbon mass plus 4 hydrogen mass plus oxygen mass. Carbon mass 12, hydrogen 1 into 4 plus oxygen 16. So it comes out to be 32, or 32 if you want to change into kilogram, then 0.032 kg per mole. Now here the molarity of the methanol solution, you know that given weight, given mass कितना है, 0.793. Clear? And the molar mass, that is comes out to be 0.032 kg per mole, and molarity comes out to be, molarity of methanol solution is 24.78 moles per liter. Since density is in mass per unit volume, तो applying m1v1 mass per unit volume है, तो you can use the formula m1v1 is equal to m2v2. Now here m1 that will be 24.78. मोलारिटी कितनी है आपकी सोल्यूशन की, 24.78. वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करनी है सोल्यूशन की, और हमें दे क्या रखा है, जो सोल्यूशन हमें प्रिपेयर करना है that is 2.5 लीटर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलारिटी कितनी है, 0.25. तो V1 comes out to be 25.22 ml. Now this is the solution for this question. I hope you understand बच्चे कि आपको क्या दिया हुआ था और आपने क्या निकाला है। आपको क्या दिया हुआ था, डेंसिटी दी हुई थी, दैट इज़ 0.793 kg पर लीटर, और आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है कि आपको कितना वॉल्यूम इस मिथेनॉल का नीड है, ताकि आप एक और सोल्यूशन तैयार कर सके, और उस सोल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है, 2.5 लीटर्स, और उसकी मोलारिटी कितनी है, 0.25. So by applying the molarity volume equation, that is m1v1 is equal to m2v2. m1v1 is the solution that you use, m2v2 is the solution that you prepare. m2 that is 0.25
and V2 that is 2.5 liter. So firstly you have to calculate the molarity. Now how can we calculate the molarity? That will be the moles per liter. Know how? That is 0.793 kg per mole dissolved in 0.032 kg per mole. So by this you can calculate the molarity, that it comes out to be 24.78. By this you can use it in this given equation and you can easily calculate the V1. Now so the next question is, pressure is determined as force per unit area of the force सरफेस द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल एसआई यूनिट क्या है आपकी प्रेशर की पास्कल एंड इट कम्स टू बी 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर now if the mass of the air at sea level is 1034 gram centimeter square per centimeter square, then calculate the pressure in pascal. So firstly we know that by solving this question we know that pressure is equal to force per unit area. Pressure is equal to force per unit area. Now the force formula, that will be the mg. Force formula, that will be the mg. Mass should be in the kilogram and g should be in the meter per second square. So the mass is 1034 gram and it converted into kg. So you have to divide it by 1000 and area, that will be the centimeter square, but area should be in the meter square. So you can divide it by 100 and by this solving this equation you will get 1.01332 10 to the power 5 kg meter inverse meter second minus 2. Now we know that SI unit of force is Newton and 1 Newton is equal to 1 kg meter per second square because F is equal to MA. M आपका mass which should be in the kg and SG is the acceleration due to gravity which is be the meter per second square. Now here 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. So which is equal to 1.01332 into 10 to the power 5 Pascal. Clear? Now your next question is, what is the SI unit of mass? I have told you earlier unit of mass क्या होती है. तो SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. 1 किलोग्राम को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे? 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास. कौन सा मास? किसके इक्वल होगा वो? इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम. Mass of international prototype of kilogram. Now next question is, match the following prefixes with multiples: micro, deca, mega, giga, femto. Now micro, that will be 10 to the power minus 6, deca 10 to the power 9, mega 10 to the power 6, giga 10 to the power 9, femto 10 to the power minus 15. Clear? Now next your question is 16th question. What do you mean by significant figures? Significant figure क्या होता है? Now significant figure are those meaningful digits. सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है बच्चे? वो मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं डेट आर नोन विथ सर्टेनिटी. जिसका हमें हर एक डिजिट की सर्टेनिटी हमें पता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर. दे इंडिकेट्स अनसर्टेनिटी इन एन एक्सपेरिमेंट और द कैलकुलेटेड वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल 15.6 ml इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. तो यहाँ पे हमें पता चला 15 तो सर्टेन है एंड 6 क्या है? अनसर्टेन. एंड द टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इज 3. तो हैंस सिग्निफिकेंट फिगर आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर. भाई कितने डिजिट हैं किसी नंबर में, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट दैट रिप्रेजेंट द अनसर्टेनिटी ऑफ द रिजल्ट. भाई आपके डिजिटल वैल्यू में नंबर में कितने डिजिट्स हैं जो किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्टिनिटी को रिप्रेजेंट करता है.
Now next is question number 17. A sample of drinking water was found to be contaminated with chloroform. Now the formula of chloroform is CHCl3, supposed to be carcinogenic in nature. Clear? And the level of contamination was 15 ppm. Level of contamination was 15 ppm by mass. तो पहले हमें ये पता होना चाहिए बच्चे, ये ppm ही क्या है. नाउ ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, वेरी मच सिमिलर टू द परसेंटेज. परसेंटेज में हम कैसे निकालते थे कि कितना सोल्यूट 100 ग्राम में डिजोल्व है. ये कहते हैं ppm वाले कहते हैं कि कितना सोल्यूट 10⁶ अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में डिजोल्व है. तो ppm हमें दिया हुआ है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज बाय mass. Now amount of solute 15 divided by amount of solution 10 to the power 6. तो 15 divided by 10 to the power 6, क्योंकि हमें मास परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100. तो इट कम्स आउट टू बी 15 into 10 to the power minus 4, or you can say 1.5 into 10 to the power minus 3%. Now second is determine the molality. आपको क्या डिटरमाइन करनी है? Molality. Now what is molality? Number of moles of solute dissolved in the per kg of the solvent. कितने आपके सोल्यूट्स जो हैं कितने सॉल्वेंट में डिजोल्व है, 1 kg सॉल्वेंट में डिजोल्व हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मोलैलिटी. नो नेक्स्ट हमें मोलैलिटी निकालनी है. तो वी नो डैट 100 ग्राम सैंपल में कितना होगा, बिकॉज इन प्रीवियस क्वेश्चन वी सॉल्व द 100 ग्राम of solution contained 1.5 into 10 to the power minus 3%. So the 100 ग्राम में कितने आपके 1.5 into 10 to the power minus 3 ग्राम of chloroform. तो 100 में इतने, तो 1000 में कितने होंगे? 1000 ग्राम ऑफ द सैंपल में कितने होंगे? 1.5 into 10 to the power minus 2. So how can you calculate the? Firstly you have to know the number of moles, that is given weight 1.5 into 10 to the power minus 2 divided by molar mass. वो कैसे निकालेंगे? कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस 3 into chlorine, and it comes out to be 119.5. Clear? So the molality of the chloroform in water is 0.0125 into 10 to the power minus 2 small m, where small m represent molal. Small m represent molal, or you can also write it 1.25 into 10 to the power minus 4 molal. Okay? Now our next question is, express the following in the scientific notation. First is 0.0048, second is 234000. So आप कैसे साइंटिफिक नोटेशन करेंगे? That will be the 0.0048 को 4.8 into 10 to the power minus 3. 4.8 into 10 to the power minus 3. तो क्योंकि आप राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, सो आप क्या करेंगे? 4.8 into 10 to the power minus 3. Now 234,000 को आप कैसे लिखेंगे? 2.34 into 10 to the power 5. 8008, 8 मतलब 1 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है बच्चे. तो 8.008 into 10 to the power 3. 500.0, which is equal to 5.000 into 10 to the power 2. 6.0012, which is equal to same 6.0012, because in scientific equation you have to do the point after 1 digit. So I hope you understand today's session. So thank you. Bye bye.